Hello students, welcome to Vipinsharma physics channel. Dear students, we have been working on the concepts of the waves, and you know that we have done some important concepts like Newton's formula for the velocity of sound in gases, then Laplace correction, and in Laplace correction how bulk modulus is gamma p. Now, dear students, I am going to discuss with you effect of various factors on the speed of sound. When I talk about the speed of sound, I mean longitudinal wave. Effect of various factors, effect of various factors on the speed of sound, that is longitudinal wave. Longitudinal wave. The first is effect of pressure. I will do one thing students, मैं ये करूँगा, मैं एक इफेक्ट समझाऊंगा, फिर मैं उसको रब कर दूंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सारा बोर्ड हौश पौश नहीं होगा, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर. You know, according to Laplace formula, the speed of sound in gases V equals to under root of gamma p upon rho. Now, it appears that speed of sound V, speed of sound V, change in the system. If the pressure changes, the speed of sound changes. Actually, let us see, is it so? Let us see, is it so? You know, P equal to RT for 1 mole. You all know that P is pressure, V is volume, R is gas constant, T is temperature. Correct? You are all aware of this, you know. R is gas constant, you know. And dear students, T is absolute temperature. Now, instead of volume, can I write pressure into mass upon density equal to RT? Haji, can I write pressure is equal to mass upon density into RT? So what does it becomes? P into m upon rho into RT. What is P upon rho? RT upon m. R is constant, temperature is constant, mass is constant,
तो P upon rho is equal to a constant. Therefore, V is equal to gamma constant multiply by P upon rho constant. The velocity remains constant. Is it interesting? There is no effect of pressure on the gas. Hence, speed of sound will not change with the change in pressure. Hope it is clear. Need not to further confuse you. Physics ना ऐसे ही बिना मतलब के बदनाम कर देते हैं, टफ है, कहाँ टफ है बताओ. At constant temperature, if you vary the pressure, then density will also vary. Because you know, ये देखो, pressure is proportional to density. एक बार ना मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मेरे को बोला क्लास में मेरे केमिस्ट्री सर ने, यू स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज बॉयल्स लॉ. अब मैंने बोला सर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. मेरे टीचर को बड़ा गुस्सा आया, बोलता स्टैंड अप. मैं कहा यस सर, गेट आउट. I still remember Dr. H.R. Jindal, Multanimal Modi Degree College, Patiala. I'm talking of the pre-university. You know, it is 10 plus 1, right? So, as I was standing out, my honorable teacher was very intelligent man. Dr. H.R. Jindal is a phenomena. He said, come inside, अंदर आओ. मैं कहा यस. क्या डिफाइन किया था तूने? मैंने कहा सर टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. अच्छा. मैंने कहा यस सर. कैसे? मैंने कहा सर मैं थोड़ा उल्टे काम करता हूँ. सभी लोग बोलते हैं टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. Sir, inversely proportional to volume is directly proportional to density, because mass per unit volume is density. So mass is constant. तो स्टूडेंट्स पंगे लेना, सब्जेक्ट के साथ मजा आता है. ठीक है, बढ़िया. एक और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. यू मे एग्री और यू मे नॉट एग्री. यहाँ ठंड बहुत है, मैं एक मिनट अपना जैकेट पहन लूं. You may agree or you may not agree. जब ये स्टूडेंट कोविड आया ना, तो कोविड में अब एक ही सहारा था इंटरनेट का, है ना. वही इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट. तो मैंने एक चीज नोट की कि अगर आप में टैलेंट है ना, तो इंटरनेट देवता बोलता है कि तू यार आजा, तू आजा, तेरे को सपोर्ट मैं करता हूं. और अगर तुम में सच में दम है तो पब्लिक में तुम्हारा मैसेज जरूर देगा. स्टूडेंट्स ये फैक्ट है. अब वो वक्त खत्म हो गया, दैट एरा इज गॉन, कि नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको शेयर करना चाहते हो तो करो. और हमारा जो कंट्री का स्टूडेंट है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है. ये ना मतलब मैं आपको फैक्ट बताता हूं. मैं बहुत स्टूडेंट्स को मिला हूं, चिड़गांव टू चंडीगढ़, पालमपुर टू पटियाला, बैजनाथ टू बठिंडा, ठीक है, धर्मशाला टू फिरोजपुर, पंजाब, देन हरियाणा, अंबाला, कैथल, पेवा,
ठीक है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, दिल्ली एनसीआर करेंगे स्टार्ट। तो बहुत स्टूडेंट्स को मिला हूँ, मेरे देश के बच्चे बहुत प्यारे हैं यार, आई सैल्यूट दैम। आप कभी मेरे प्लेलिस्ट में स्कूल सेशंस में जाना, तो मैंने वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं। मज़ा आता है यार पढ़ा के आप लोगों को, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो अब मैं आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी सिखाई देता हूँ। हो जाए, मेरे को रब करना पड़ेगा, ठीक है, इतने में मैं जादू से रब करता हूँ। नए स्टूडेंट्स को रब नहीं करते, बिकॉज मुझे यही यूज हो जाएगा। अब मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसको रब कर लेता हूँ। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, इसको हम लोग किस तरह से इसको हम स्टडी करते हैं, जरा देखते हैं। डू यू नो P अपॉन, डू यू नो P अपॉन, एक मिनट, डू यू नो P अपॉन some switched on here. Do you know this P upon rho is equal to RT upon M? Agreed? This P upon rho is equal to RT upon M. ये हमारा एक ब्रांड है सागा, तो मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाऊं, प्रमोट करता हूँ, तो यहाँ भी लगा हुआ है सागा। तो P अपॉन रो RT अपॉन M। तो डू यू नो स्टूडेंट्स, वी हैव V इज इक्वल टू gamma P upon rho, we have is equal to gamma RT upon M. It is clear from this that speed of sound in a gas is directly proportional to the square root of the temperature. If you increase the temperature, speed of sound will increase by double value. तो गर्मी में आवाज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है। Speed of sound is directly proportional to the square root of the absolute temperature. Is it clear? So hope you are getting what I am telling you.